month of April has so far been quite a tumultuous one. Hindus celebrated Ram Navami and Hanuman Jayanti. Muslims have been on Roza this month of Ramzan. In different parts of the country, local frictions between two communities sparked off tensions and in some places flared into clashes. The authorities responded with strict implementation of security and bulldozers. JCBs rolled in the capital city and in Himmatnagar, Gujarat. A 300-year-old temple was razed by authorities in Alwar, Rajasthan. Locals lost business, parts of their homes, and the explanation given to them was that these are authorized by law to remove illegal encroachment on public property. In other parts, cries for similar bulldozer drive became stronger to right the ills of civic amenities, and the fissures of communal divide of the social fabric kept widening in Bulldozer Bharat. Hello and welcome to this special edition of the top story of this week. Bulldozer drives in different parts of the country has been in the headlines for the last few weeks or so. In the next half an hour, we will recap and revisit what happened in the name of removing illegal encroachments in cities and why it raised eyebrows and many questions. Let's begin with the capital city. On the 20th of April and then again on the 27th of April, in two different parts of Delhi, we saw bulldozer drives. What put these two incidents under scanner is the possible motive behind the drives and the possibility of divisive politics at play. Here's a report. Delhi Municipal Corporation was at the center of another bulldozer controversy on 27th April. It was once again ready with the demolition drive to free the capital city of illegal encroachments. This time, the target area was South Delhi and the controversial Shaheen Bagh in particular. हमारे पिछले 5 साल से जो इस टेन्यूर के लोग थे लगातार वार्डों में सर्वे कर रहे हैं। मैं तीसरी बार इस वार्ड में आया हूं, जहां निगम पार्षद ने जब बोला हम वहां पर जाकर किया है, और इस बार निगम पार्षद जी को महसूस यहाँ पे बार-बार कंप्लेंट आ रही थी। उन्होंने बोला इस बार हमें इधर जाना है। भाजपा के लोगों को सबसे पहले आज बलसवा में जा करके और सर्वे करना चाहिए कि आखिर 15 साल में उन्होंने क्या किया था कि जो आज दिल्ली के लोगों को इस तरह से आग से जूझना पड़ रहा है। बुलडोजर चलाए होते 15 साल तो ये पहाड़ नहीं खड़ा होता। This war of words comes after Delhi's South MCD mayor called for a crackdown on Rohingya and Bangladeshi encroachments in the national capital. Claiming that several government areas in Shaheen Bagh are being illegally occupied, the mayor said that the encroachers have been living illegally for decades in Delhi's Kalindi Kunj and Sarita Vihar too. दिल्ली को पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन रोहिंग्यों को पानी देने की आम आदमी पार्टी की ड्यूटी है। आज दिल्ली के लोगों को स्वच्छ हवा नहीं मिल रही है, दिल्ली के लोगों को बिजली मिल रही है, लेकिन दिल्ली सरकार रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को रैन बसेरों में रख रही है, उनको खाना भी देने का काम कर रही है, उनको बिजली पानी मुफ्त देने का काम कर रही है। तो ये कौन सी राजनीति है, कौन से देशभक्त है? सबको मार दो, हमें भी मार दो। कलकत्ता के नहीं पुलिस वाले कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। अचानक आया तोड़ने लगी। यहाँ पर कम से कम 30 साल हो गया, 30 साल से दुकान लगा रहे, कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं। मैम आप पूरा शांत हो जाइए। कैसे शांत होगा बोलो? रोजी रोटी मेरा 5 लाख रुपए कर्जा, हमने ये घर भी बनाया था बचपन से। यहाँ पे पीछे मेरा माँ का घर है, यहीं पे माँ का घर पीछे गली में। मैं बचपन यहीं पे शादी है, गली पीछे। Just 7 days earlier, another bulldozer drive by the municipal corporation at Jahangirpuri in northwest Delhi was criticized, and the apex court had to step in and stop it. कुछ नहीं बताया था। नोटिस आया होगा एमसीडी का? नोटिस कुछ नहीं आया जो है। भाई आप यहाँ से कितना दूर रहते हैं? कितनी दूरी पर? वहाँ आई बुलक में रहते हैं 2-3 किलोमीटर करीब आगे यहाँ से। हाँ जी। और यहाँ पर जब बुलडोजर चल रहा था तो आपको किसी ने फोन करके बताया यहाँ पर? जैसे हम लोग आए, जैसे तोड़ना चालू कर दिया, पहुँचे थे उससे पहले से ही। हाँ जी।
मुझे एक बात बताइए कि ये जो दुकान थी कितने समय से यहाँ पर थी? जी ये 15-20 साल हो गए इसको। 15-20 हाँ जी। सालों से। और आज अचानक से बुलडोजर चलने लगा अचानक से। तो क्या यही आपकी आमदनी का एक सहारा था? यही आमदनी का सहारा था जी उसका। Ruxana Jahan was shocked and refused to come out of what was left of her home. घर का अंदर सो रहा था, ये तोड़ ताड़ के चला गया। आप सो रहे थे? हाँ, मेरा तो भी घबराहट हो रहा है, सब पुलिस वाला आ गया, मेरे को डर लग गया। तो मैंने जो कर रहा है मार के चला जाए वो भी मंजूर है। मेरा आदमी नहीं है, 2 बच्चा और बहू है, और कुछ नहीं है, और कोई मेरे परेशानी नहीं। लेडीज सब सुबह से बोल बोल के थक गई, इससे पहले भी डरी हुई हैं, तो किस तरह बातें करें बताइए। एक तो रमजान का महीना है, सब रोजे से हैं, किसी के हलक में पानी नहीं जा रहा है। आपको यह देख रहा है कि कोई पानी के लिए या कोई हेल्प के लिए या कोई मदद के लिए आ रहे हैं? सिर्फ मीडिया वाले आ रहे हैं, पूछताछ करें। कितना महिलाएं बोले बताइए, रोजा रख करके कितना बोल सकती हैं? नहीं बड़ा वो तोड़ा नहीं है, ये टूट गया। जब तोड़ना था हिस्सा ही तो ये भी तोड़ना था, ये नहीं तोड़ा, ये तोड़ा। अब अलग अलग तरीके से कार्रवाई हुई है, अलग अलग कारीगर से एक तरफा हो रहा है ना। Unlike what happened earlier on 20th April in Jahangirpuri, this time the municipal authorities tried to follow protocols of informing illegal occupants at Shaheen Bagh. Shaheen Bagh became the epicenter of the anti-CAA protest 2 years ago. Other than Shaheen Bagh, SDMC has identified several areas including Okhla, Vishnu Garden and Madanpur Khadar for this round of bulldozer drive. The capital city wasn't the one to witness this drive against illegal encroachments in the pockets frayed with communal tensions. It wasn't the only one. In Gujarat and in Rajasthan, similar bulldozer drives added to move further to question the justification of these operations. The whole of last week of April, bulldozer operations in different parts of the country made headlines. In Gujarat, bulldozers rolled into riot zone Himmatnagar, which saw clashes on Ram Navami 2 weeks ago. Local administration launched a demolition drive targeting illegal construction by the alleged rioters on 26th April. As bulldozers took down chunks of concrete, locals fearing full demolition took down illegal parts of their buildings themselves. ये हमारी बिल्डिंग है, वो आप खुद ही तोड़ रहे हैं आज? हाँ, हम खुद तोड़ रहे हैं। हमारे समाज के हमारे इंसान लगाए हुए हैं जमात के, वो खुद तोड़ रहे हैं। कोई ये गैर कानूनी नहीं है। Locals are worried about the rising communal divide. बुलडोजर का भी खौफ है और मतलब हिंदू मुसलमान से लड़ाई होती है, इसका भी खौफ है नहीं लोगों को। तो Officials defended the bulldozer crackdown. टीपी की एक कार्यवाही है, जो टाउन प्लानिंग स्कीम में हमने जो 15 मीटर का जो रोड रखा था वो हमको 12 मीटर मिल रहा था, तो उसमें हमारा को 3 मीटर का जो वाइडनिंग करना था वही हम कर रहे हैं। 1-2 स्ट्रक्चर ही है जो रोड में आते हैं 15 मीटर में, वही तोड़ने का है। The officials are over here with bulldozer. They have the whole machinery over here. There are many of the illegal structure which people themselves are demolishing and taking their important valuables away from this particular place. Himmatnagar had seen violent clashes when Ram Navami Yatra was passing through a Muslim majority area on 10th of April. Three temples were demolished. Notice sent to another one in Alwar district of Rajasthan on 22nd April. Bulldozers have sparked a political fight in Rajasthan's Alwar district. Locals claim the demolished temples in Rajgarh's Sarai Mohalla were 300 years old. They were brought down for development work. तो यहाँ तोड़फोड़ की गई है और यहाँ के जो प्रशासन है, लोकल बॉडी है, उनके द्वारा ये तोड़फोड़ की गई है। हमने जो जानकारी करी नगर पालिका बोर्ड के द्वारा, तो उन्होंने कहा था कि हमारे द्वारा मास्टर प्लान का कोई निर्णय नहीं लिया गया, हमारे द्वारा गौरव पथ का निर्णय यहाँ लिया गया था कि उसके अंदर जो अतिक्रमण चिन्हित करके अतिक्रमण तोड़ के और हम निर्माण कार्य करेंगे। Outraged by the demolition, some Hindu organizations protested against the decision. BJP hit out at the ruling Congress government over the demolition drive. अधिक वर्ष पुराने एक शिव मंदिर के ऊपर
जिस प्रकार से बुलडोजर चलाया गया है और जिस प्रकार से ड्रिलिंग मशीन के माध्यम से शिवलिंग के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, ये हम सब के हृदय के ऊपर प्रहार है। The Congress claims the BJP rules the Rajgarh municipality, which allegedly ordered the removal of encroachments. भारतीय जनता पार्टी देश में बुलडोजर लेकर आई, लोगों को रोने के लिए मजबूर कर दिया। अब बीजेपी का बुलडोजर मंदिर के ऊपर चढ़ गया, मंदिर को तोड़ दिया। पाप किया बीजेपी के लोगों ने। बीजेपी के लोगों ने मंदिर तोड़ा है। मंदिर हम बनाएंगे, इसलिए बनाएंगे क्योंकि बीजेपी ने जो पाप किया है उसके लिए बीजेपी ना माफी मांगती है, ना सच को स्वीकार करती है। Bulldozer divide in these cities in two different states during Ram Navami and Ramzan has created more communal divide in the local social fabric. It's time for a break. Here on the other side, chorus for Bulldozer justice gets louder. After UP, MP in Gujarat, Karnataka also is demanding Bulldozer model. Well, after Ram Navami clashes in Nellore, Andhra Pradesh and a mob attack at police station in Hubballi in Karnataka, the chorus for Bulldozer justice is coming from the southern states as well. BJP netas are saying the fear of bulldozers is the only thing that's going to instill fear and deter rioters. If bulldozers were out in Gujarat and Rajasthan, the BJP is now demanding their deployment in Andhra Pradesh, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. Following tense moments between Hindus and Muslims in Nellore, Andhra Pradesh, as a Hanuman Shobha Yatra passed a mosque on 24th of April, two groups chanted Jai Shri Ram and Allahu Akbar. Even as security personnel formed a wall between the two. The organizers of the Yatra accused the other group of throwing beer bottles and making offensive gestures. Hindu Samaj is very angry with this incident and we blame the Chief Minister Jagan Mohan Reddy and his YSRCP government that they are indulged in mere vote bank politics and they are supporting such type of acts. What surprised everybody is the way that national media or the national leaders were speaking about this small trivial incident and trying to blow it out of proportion. I just want to request everybody that AP is a very peace-loving state. The police played down the face-off. Youth have been made some bike sounds and chanting with the slogans of Jai Shri Ram. And at the same time, the youth inside the mosque, they are saying the Allahu Akbar. And there is some signs they have been shown it. And except that, there is no throwing of stones or no clashes and no throwing of bottles or nothing. No such instances happened. The BJP leadership in the state demanded a bulldozer drive to settle the issue. In Madhya Pradesh's Khargon, which saw attacks on a Ram Navami procession on the 11th of April, a BJP MP made a provocative dare. Large-scale arson and stone pelting had led to as many as 10 policemen being injured. Asking Hindus to unite to take on those attacking religious processions, the MP, Gajendra Patel, said Hindus must answer in kind to stone pelters. ये माँ भारत का देश है, हम धर्म के आधार पर जीते हैं और अगर आपने पत्थर बरसाए हैं तो हम भी संत सनातन धर्म के लोग हैं। पत्थर तुमने बरसाए हैं, हम बड़े पत्थर और ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार रहना। The state government has set up its first two-member claims tribunal under the Madhya Pradesh Damage to Public and Private Property Act 2021 to recover damages from the rioters. A similar bulldozer controversy has erupted in Uttar Pradesh as well. Railway authorities have issued an anti-encroachment notice to a temple in the city, sparking resentment among locals. अब तक कोई समस्या नहीं आई तो अब इसको इशू क्यों मनाया जा रहा है? मंदिर अपनी जगह रहने दे, विकास करना है तो विकास का नाम न लें। विकास के माध्यम से मंदिर हटाने का प्रयास है, हिंदू धर्म की आस्था और भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास है।
Locals claim the Man Chamunda temple near Rajamandi railway station is almost 100 years old. अगर तोड़ेंगे तो वो खुद झेलेंगे। आगरे की जनता जो करेगी वो सबको पूरे प्रशासन, पूरा उत्तर प्रदेश शासन सब कुछ देखा जाएगा। जो भी होगा उनको खुद पता चल जाएगी। अगर ये मंदिर पे अगर 1 इंच भी हाथ लगाते हैं तो आगरे की जनता उनको जवाब देगी पूरी। The question is, can bulldozers be the answer to India's widening communal fault lines? Bureau Report, India Today. Well, like a playbook, international celebrities have also jumped into the bulldozer battle. First, it was footballer Ozil who called on his followers to speak out against human rights violations in India. And then it was celebrity host Padma Lakshmi who tweeted on what she called nefarious propaganda against Muslims. Two celebrities, two back-to-back tweets, made many suspect if another anti-India toolkit is in the making. We know that during the Prime Minister's visit he was photographed leaning out of a digger in a JCB factory, and just days before the BJP used JCB diggers to bulldoze Muslim shops and homes and the gate of a mosque in New Delhi. Did the Prime Minister raise this with Modi? If not, why not? And does the Minister accept that the Prime Minister's visit to India has helped to legitimise the actions of Modi's far-right government? British Member of Parliament Nadia Whittam's question in the British Parliament casts a dark shadow on the bulldozer drive carried out in the past 2 weeks in different cities of the country. Boris Johnson's government sidestepped the question. We condemn any instance of discrimination. Thank you. The British MP took to Twitter to raise her questions again. British Prime Minister Boris Johnson, during his recent visit to India, inaugurated a $100 million factory near Ahmedabad, which will fabricate parts for global production lines for the JCB. It happened a day after JCB bulldozers raised down illegal parts of Jahangirpuri. British MP Nadia Whittam wasn't the only British Member of Parliament to question Boris Johnson. Another MP, Zara Sultan, raised the same questions in the British Parliament. They weren't the only examples of international outrage on the bulldozer drive carried out in multiple Indian cities. Footballer Mesut Ozil tweeted saying he was praying for the safety and well-being of his Muslim brothers and sisters in India. He called for spreading awareness against what he termed was a shameful situation, alleging human rights violations in India. Within hours, celebrity author and host Padma Lakshmi also tweeted saying it was sickening to see the violence against Muslims. She termed it dangerous and nefarious propaganda. Bureau Report, India Today. Well, it's time to wrap up this special edition. News and updates continue on the other side. Have a wonderful weekend and keep watching India Today.